boy. You see, his problem is he's not able to open his mouth. मुंह खोलिए आप अच्छी तरह से, वहाँ देखिए अच्छी तरह से इतना. See, he's got nil mouth opening. So this is the length. The 22.76 is the length of the exact attachment of the bony ankylosing mass to the skull or the cranium. So that means I'll have to take off about a centimeter of bone, but for 22.7 millimeters. We've not only given him a functional mouth opening now of close to 4 centimeters. He hadn't opened his mouth for the last 17 years. We've given him mouth opening and also given him a much more proportional face. It's never going to be 100% symmetrical in this case. थोड़ा डिफिकल्ट था, हल्का हल्का थोड़ा पेन होता था तो और मुंह भी बंद नहीं हो पा रहा था तो तब आपका मुंह खुल रहा था ज़्यादा, बंद होने में प्रॉब्लम हो रहा था. ओके. Hi friends, I want to say something about surgeoncut.com. Lot of doctors, surgeons, dental surgeons, other medical professionals world over have been regularly asking us for videos that YouTube doesn't like to show to people because it has a lot of blood content and it's the way we do surgeries. So we've got this website now up and about. You can subscribe, you can learn how we do these surgeries exactly, no editing, but in good clarity, 4K clarity. So all the best and thank you. बचपन से सर, बचपन से मतलब जब इनका कितना था साल? 2-3 साल और सर उसका ये खींचने लगा सर धीरे धीरे से. 2-3 साल से लग गया ऐसे. उसके बाद आपने कुछ इलाज करा? काफ़ी डॉक्टर्स को तो दिखाए होंगे आपने, क्या बोले? बड़ा होने पर दिखाया सर हम लोग यहाँ बिलासपुर में. हाँ. तो वो बोले कि ये इसका तो वो नहीं है. हाँ. नहीं हो पाएगा बोला था. ठीक है, तो देखो हो पाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, हम आपको सही कर देंगे. इसके लिए आपको जॉइंट में सर्जरी करना पड़ेगा और ये हड्डी है, हड्डी में सर्जरी करके मुंह खोल देंगे, ठीक है ना. तो वी हैव दिस 18-year-old बॉय. यू सी हिज प्रॉब्लम इज ही इज़ नॉट एबल टू ओपन हिज माउथ. मुंह खोलिए आप अच्छी तरह से, वहाँ देखिए अच्छी तरह से इतना. सी ही इज़ गॉट निल माउथ ओपनिंग. दिस इज़ अ कंडीशन कॉल्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकिलोसिस, which means the joint that starts here is fused to the skull, and you know the problem is on his right side, and because he's having the midline shifted towards the right, this side of the mandible has grown normally and this one has not grown. That's why it's very short with a short ramus. I can see the notching here, you can see that notching. All these are indicative of the fact that he's got a severe bony ankylosis. So what we're going to do usually is a functional aspect. You can also distract the lower jaw and then release it. But then the more effective way is also to do a pseudo joint by opening up the temporal region, and also by getting the temporalis muscle inside. We can interposition that with the joint and do some extended genioplasty to basically give him much fuller, much proportional face, and all the same time give him the most important function of able to open his mouth, chew and eat. तो मैं क्या बता रहा था इनको कि आपको ऑपरेशन के बाद ये मुंह खुल जाएगा, आपको 7 से 10 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, और उसके बाद इनका फेस जो है काफ़ी मतलब टेढ़ा है, वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफ़ी कुछ सही होगा. एकदम बराबर तो नहीं हो पाएगा, एकदम आपको बराबर चाहिए तो फिर डिस्ट्रैक्शन करना पड़ेगा फर्स्ट, फिर मुंह नहीं खुलेगा, तो फिर 2 ऑपरेशन हो जाएगा वो एक ही ऑपरेशन में, क्योंकि आप काफ़ी दूर से आए तो मुंह भी खुल जाएगा और फेस इससे काफ़ी अच्छा होगा. 100% मतलब यानी
नॉर्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन मुंह खुल पाएगा अच्छी तरह से, खाना खा पाएंगे ये, तो मेन है अभी ये उम्र में। और अगर बाद में ये चाहते हैं तो फिर एक और बार भी अगर आप चाहते हो तो 2 साल 5-6 साल के बाद कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। कुछ डाउट है आपको? कुछ डाउट नहीं है? डर नहीं है? चलो फिर आपका स्कैन मैं दिखाता हूँ। तुषार, so we're going to show you his scan here. There you go. So this is his normal joint, which is his left side, and then you see here it's all fused. I'm going to show you in the cut section now. We're going to see how much the fusion is. What is the size of the ankylotic mass? That's important for us to know because I can plan my surgery. Keep looking at this space, and as long as there's a gap, so this is the part of the skull, and then this is the part of the lower jaw. Once there's no gap between, you see that it's slowly reducing, and now it's fused. So now this is how it should be, or it should have been like this, wherein you see a joint space, you see the lower jaw in the cut section, but here you're seeing a big mass. All right, I'm going to show you the dimensions of this mask now, of this mass. So it's a pretty large one, as you can see. It's 38 millimeters in one dimension, and let's see what it is in the other. It's about 33 or 31. So it's about 3 centimeters in one dimension and about 4 centimeters in the other, extending inside deep from here, from where his ear is. That's where the main issue is. So you see, it's not a small ankylotic mass, and there you see it becomes pretty normal now. That's the upper jaw and the sinus. That's the marking I did. I'm also going to show this to you on another view where you can very clearly appreciate the same marking that I've done. And this is the sagittal view now. So I'm going to try and show you the same marking. Yeah, there's the issue. So I'm going to mark again. Somehow the marking doesn't come from my earlier marking. Okay, so this is the length. The 22.76 is the length of the exact attachment of the bony ankylotic mass to the skull or the cranium. So that means I'll have to take off about a centimeter of bone, but for 22.7 millimeters. Then once the two things are separated, that is the upper part of the lower jaw and the cranium is separated, we put an interpositional material. Normally all of us have a joint. Joint consists of a disc. It's a soft tissue that moves between two bones. Now that soft tissue that he had originally is no longer there, and hence the two bony ends have stuck together, have got fused. So when we detach it, I got to put a soft tissue in between so he has a functional joint in the years to come. Yes, it's going to be a pseudo joint, it's going to be a new joint that we're creating, but I would use the muscle and the temporoparietal fascia to do that job. So hence we'll have to do an extended incision on the side of his skull to get the muscle and the fascia to put in between. This defect have to be removed, and that's how the surgeries are. We call that interpositional arthroplasty.
So technical terms are, this is going to be a temporomandibular joint release with interpositional arthroplasty with temporoparietal facial flap and muscle and a contralateral or the other side coronodotomy with an extended genioplasty. That's the scientific term for the technique that we're going to do for this guy. Thank you. This, we've not only given him a functional mouth opening now of close to 4 centimeters, but you can also see the improvement in his facial profile. We're going to show you the side view too. So you can see that he literally didn't have a chin. It was really retrognatic. We've got it forwards by several centimeters, as you can see. Alright, and we've got almost 4 centimeters of mouth opening as well. Once again, we're going to show you how he looked before we started. He hadn't opened his mouth for the last 17 years. We've given him mouth opening and also given him a much more proportional face. It's never going to be 100% symmetrical in this case, but it's going to be a huge improvement, as you can see. Side view one more time. Okay, thank you. Yesterday actually it was not opening. Is he able to close on his own? That condylar guidance is not there. So you can here click. Okay. खोलो मुंह खोलो तुषार, खुद से खोलो और थोड़ा से हाँ, ओके और थोड़ा खोल सकते हो आप। अभी मिरर में देखो, मैंने कैसे बताया, देख रहे 2 उंगली 3 उंगली कितना जा रहा है, देखो अभी मिरर में देख के बताओ मुझे, 2 से भी ज़्यादा थोड़ा, हाँ ऑलमोस्ट वेरी गुड, ये नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड, ऑन इज ऑन ओनली। ठीक है, अभी मुंह बंद करो थोड़ा, हाँ बंद करने में हाँ तो गाइड करके बंद करो, हाँ हाथ दे के हमेशा बंद करना। Hello everyone, here we have this patient with us, a follow-up. Now for a follow-up this time, it's the patient who has a few things to share with the audiences out there. He's a young boy named Tushar, right? Tushar, आप कहाँ से हो? आपकी जर्नी कैसी थी? अब यहाँ कैसे है? थोड़ा बताओ हमें। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं कितने साल के हो आप तुषार? मैं 18-19 साल का। 19 साल के हो। ठीक है। आपका प्रॉब्लम क्या था? आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए तुषार? जब आप पहली बार आए, हमने ये फ़ोटो पकड़ा है, अब ये फ़ोटो में देखो, हमें समझ में आ रहा है, पर हमें आपके वर्ड्स में सुनना है कि क्या बेसिक क्या प्रॉब्लम थी कि आप यहाँ पे आए हॉस्पिटल में? सब मुंह नहीं खुलता था, ओके। खाने में दिक्कत होता था। कोई चोट लग गई थी बचपन में, गिर गए थे? नहीं, पर वो खुलता ही नहीं था। खुलता ही मैक्सिमम जितना जिस फोटो में दिख रहा है उतना ही। फिर खाने पीने में तकलीफ नहीं होता था आपको? होता था। आपने कभी डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने कुछ आपने सर्जरी की इससे पहले? नहीं, डॉक्टर को दिखाए थे अच्छे से, हाँ। तो बोला कि वो नहीं हो पाएगा। ओके। आप जब यहाँ पे आए तुषार, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ से बहुत दूर है, एक तो पहले हाँ। आने के बाद आपने दूसरे लोगों से बात की, पेशेंट से बात की,
एक पेशेंट से बात किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनको भी सेम प्रॉब्लम था? सेम। ओके। और आप यहाँ पे पापा के साथ आए तुषार? हाँ। तो फैमिली का भी सपोर्ट इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप आ रहे हो और ये मेजर सर्जरी है। और लोगों का कैसा है, एक तो ठीक है आप 18 साल से ऐसी कंडीशन है आपकी, यहाँ पे आपसे पहले लोग आए जिन्होंने 40 साल की उम्र में किया है, तो वो अपनी लगभग 4-4 डेकेड जिसको बोलते हैं लाइफ ऐसे ही जहाँ मुँह बंद है वैसे उन्होंने बिताया है। आपका स्कैन लिया गया, आपको डॉक्टर ने समझाया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुँह नहीं खुलता है, ये आपको समझ में आया? हाँ। सर्जरी कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि सर्जरी से पहले सबसे पहले एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया थोड़ा डिफिकल्ट था बट हो गया। Very brave, yes. He says very casually कि हो गया, but the thing was since it's a difficult intubation, extremely difficult because of the mouth opening as we see. Our anesthesia team, a very capable team indeed, did a blind nasal intubation for him, and in blind nasal intubation one of the major things which is needed from the patient's point of view is his cooperation. He was extremely cooperative at his end. It was a blind nasal intubation which he tolerated for minutes, by several minutes. It was around 20 minutes or so. He was completely comfortable with the intubation before the actual paralyzing, the induction of the general anesthesia began. ठीक है तुषार, अभी एनेस्थीसिया हो गया, सर्जरी हो गया। सर्जरी के बाद जो फॉलोअप होता है, क्योंकि ऐसे सर्जरीज़ में काफ़ी टाइम रहना पड़ता है, मुंह खोलने के एक्सरसाइजेज, बंद करना, बहुत कुछ रहता है। सर्जरी के बाद से लेके अब तक, अभी तक बोल सकते हैं 10 दिन से ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। वो सफ़र कैसा रहा आपका सर्जरी के बाद से अब तक का? थोड़ा डिफिकल्ट था, हल्का हल्का थोड़ा पेन होता था तो। हाँ। और मुँह भी बंद नहीं हो पा रहा था। हाँ, तब आपका मुंह खुल रहा था ज़्यादा, हाँ, बंद होने में बंद प्रॉब्लम हो हो रहा रहा था। ओके। तो खाने पीने कैसा था, क्योंकि आप दूसरे स्टेट से भी हो? ठीक ही था। लिक्विड डाइट, जूसेस पे थे आप इतने दिन? हाँ। सच? ठीक है। अभी आपका मुंह कंपेरेटिवली बंद भी हो रहा है, खुल रहा है, ठीक है? हाँ। तो शायद आप अभी खोल के देखोगे अभी कितना मुंह खुल रहा है, आपसे जितना होता है। ओके, विच इज़ क्वाइट गुड, कमेंडेबल। और हम ये पिक्चर साइड में रखते हैं देखने के लिए कि पहले आपका मुंह कितना खुलता था। ये माउथ ओपनिंग है अभी विदाउट एनी गाइडेंस मतलब ये खुद से इतना खोल पा रहा है ऑलमोस्ट 2 वीक्स आफ्टर द सर्जरी, पर अभी भी एक्सरसाइजेस चालू है। इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं, ये आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा तुषार, ठीक है, घर जाने के बाद भी। हम एक और फोटो दिखाएंगे देखने के लिए कि आपका मुंह कितना खुलता है, खुद भी देख सकते हो। ये मेजरमेंट हमने लिया है सर्जरी से पहले। तुषार, अभी आप खाना खा पा रहे हो, मुझे पता है सर्जरी के बाद रिस्ट्रिक्शंस थे, हम लोग बोलते थे लिक्विड लो, जूसेस लो, पर अभी आप खाना खा पा रहे हो, मुंह खुल पा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस स्टेज से लेके अभी तक का? तो वो अभी खाना हल्का हल्का ही खा पा रहा हूँ, थोड़ा स्वेलिंग हल्का भी, और दांत भी थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसके नाम से। हम एक और चीज़ दिखाएंगे तुषार, अगर आप उसके लेफ्ट में टर्न करोगे तो सर्जरी हुई है, आधी मुंह के अंदर से है, आधी बाहर से है। अभी ये वाला पार्ट जो है अभी हील हो गया है, आपको एक पतली सी लाइन दिखेगी और ये लाइन पूरा ऊपर तक जा रहा है, जो भी बालों की वजह से ढका हुआ है। तो ये इंसिशन मार्क है जो उनके लिए लिया था हम लोगों ने। बोलना है तुषार? क्या बोलूं? खुश हो आप? अगर आप देखो तुषार, आपके जैसे केसेस ऐसे बहुत से हैं, लेकिन उनका रीच आउट होना, उनको पता होना सही ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है और यहाँ तक आना, ट्रीटमेंट करवाना, ये बहुत
प्रॉब्लम वही बात है इन टर्म्स ऑफ जर्नी, एक तो आना, टाइम निकालना उतना, प्लस हाँ पैसे भी, किसी का सपोर्ट, जैसे आपके साथ आपके पापा थे, अभी भी है पूरे जर्नी में, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब उन लोगों के लिए जो मैसेज जिनका ऐसा कंडीशन है और उनको ट्रीटमेंट